are the pictures from Nandigram as well. This is one big title clash. Didi has been roaring at Amit Shah from just meters away. This is a high voltage close encounter. The final countdown to Nandigram or nothing. Here is Home Minister Amit Shah's big roadshow now in Nandigram. Just a handful of kilometers from where Mamata Banerjee is holding this roadshow and this rally. This is Home Minister Amit Shah. Let's listen in. Let's get some sound in from the ground. आपके पास ला रहे हैं तो अभी भी ट्रक के पीछे रोड शुरू नहीं हुआ है, ट्रक के पीछे आए हुए हैं और कह रहे हैं कि रास्ता दीजिए महिलाओं के लिए, रास्ता दीजिए कार्यकर्ताओं के लिए कि वो आए, उनके साथ ट्रक पर चढ़े। वो चाहते हैं कि वो लोग आए जो यहाँ पर नंदीग्राम में पार्टी के साथ काम करते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो निचले लेवल के जो कार्यकर्ता है, उनको सामने लाया जाए, जिन्होंने मदद की है भाजपा की यहाँ पर अपना जो ग्राउंड है वो बनाने में, उनको आगे करने की बात हो रही है। शुभेंदु अधिकारी भी सामने आए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि लोगों को आने दिया जाए ताकि वो सामने जाए। वो ट्रक के पीछे रहने के बावजूद ट्रक के बजाय सामने जाए और वहां पर ट्रक के सामने चले, अमित शाह के साथ चले, ताकि जो भाजपा का दबदबा है नंदीग्राम में, जो वो दिखाना चाहते हैं अपने कैंपेन के द्वारा, वो नजर आए। क्योंकि सामने ही कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पर कैंपेन कर रही है और कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्साहित है अमित शाह को देखकर। और जो अमित शाह उनको जिस अहमियत से कह रहे हैं कि आप आगे चलिए ट्रक के, आप पीछे क्यों हैं, आप साथ चलिए हमारे, उससे काफी उत्साहित है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर और अमित शाह जो है उनके जो नारे हैं उनका जो है वो संबोधन कर रहे हैं हाथ जोड़कर। शुभेंदु अधिकारी भी उनसे कह रहे हैं कि आप लोग सब आगे चलिए, पीछे मत रहिए ट्रक के, हमारे साथ चलिए, आगे चलिए, ताकि काफिला जो है वो बड़ा नजर आए, बड़ा काफिला नजर आए भाजपा के कार्यकर्ताओं का। तो यही आप नजारा है यहाँ से, जो रोड शो का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर लगभग का है, पर आप देख सकते हैं कि काफी लोग हैं कार्यकर्ता जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भाजपा के साथ अपना समर्थन दिखा रहे हैं। वो यहाँ पर काफी उत्साहित हो रहे हैं क्योंकि पीछे गृह मंत्री खड़े होकर ट्रक के, अभी तक रोड शो शुरू नहीं हुआ है, खड़े होकर उनसे कह रहे हैं कि आप लोग खड़े मत रहिए यहाँ पर, आप आगे बढ़िए, हमारे साथ चलिए। श्वेता, this is the last day of campaigning, ladies and gentlemen, and that's why you're seeing this very, very high voltage collision and the rallies and padyatras of both Mamata Banerjee and Amit Shah / Suvendu Adhikari happening at precisely the same time. There's no time to lose. There's not a minute that can be wasted now. This is the last day of campaigning. It ends at 6 p.m. and that's why there's going to be this non-stop battle for perception, non-stop battle for votes, non-stop battle for space and the airwaves right through today in Nandigram. Nandigram is a prestige battle. The West Bengal Assembly, remember, has 294 seats. Nandigram is only one seat in that assembly, but it is a seat that transcends the fact that it is just one single seat. It carries a huge amount of weight. It is where Mamata Banerjee
really made her big launch into chief ministership from. And these are the dramatic images of the BJP that is now flexing muscle on her turf. Let's listen into these sounds. Ram obviously coming in from the padyatra, from the rally of the Rath Yatra rather, of Amit Shah, the Home Minister, on the back of what has been one of the most hostile and aggressive political campaigns in recent memory. Amit Shah on his Rath and Mamata Banerjee in her wheelchair, wiping away the sweat as she is wheeled down the ramp and then taken to her next public engagement. It's going to be non-stop till 3 p.m. This is what the battlefield of Nandigram is looking like at this time. Continues to be with us, not very far from this. Indro, can you make it clear for our viewers how far apart are these two rallies, both Mamata's and Amit Shah's? They're both in Nandigram. What is the approximate distance between the two? Very, very interesting to see how neither side is wasting a single minute on this last day of campaigning. Well, that's right, Shiv. They are a few kilometers apart, about 10 kilometers apart. But, Nandigram, of course, is a small area. And we are seeing a complete blitzkrieg as far as campaigning from both the parties is concerned. And also something which is very unique, of course, is that we are seeing essentially the entire area of Nandigram, Block 1 and Block 2, have been completely fortified with central forces, something that we've not seen in the past 14 years. We saw such scenes back in 2007 when the anti-land acquisition movement was taking place, and the West Bengal state government, the then left-front government, had brought in huge force that was deployed in Nandigram. Once again, we are seeing just before the elections, things on the ground evidently volatile. And there is a lot of polarization as well that we've seen. And therefore, the Election Commission moving in huge amount of security forces, because there is an apprehension that things might just go out of control given the situation on the ground is so volatile. And you saw how Mamata Banerjee, when she was here, she was in her fiery best and she was continuously hitting out at the Election Commission, at the BJP. She's saying that the central forces were intimidating people. She accused the BJP of pumping in cash. She said that central ministers and other ministers from outside who were coming to campaign here, they were the ones who were actually, pumping in money. She was trying to interact with the locals out here. Let's just have a word with some of the locals out here and let's try and get a sense as to what they have to say. Dara, ki mone hocche? এই যে এত সেন্ট্রাল ফোর্স এনেছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে দেখে কি মনে হচ্ছে? দিদি তো বল, হ্যাঁ ভালো মনে হচ্ছে, আমাদের সুবিধা হবে। এই যে ফোর্স আছে সেন্ট্রাল ফোর্সকে দেখে কি ভয় লাগছে নাকি আশ্বস্ত? দিদি শেষ কথা, দিদি জিতবে। দিদি সেন্ট্রাল ফোর্স আজ থেকে আশ্বস্ত হচ্ছেন যে ভালোভাবে? হ্যাঁ, আমরা সবাই ভালো পারবো। দিদিকে চাই, দিদিকে চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার দিদিদের সব জিনিসটাই ভালো লাগে। সব জিনিস দিচ্ছে, রাস্তাঘাট, চাল। হ্যাঁ, নন্দীগ্রামে কি হয়েছে? অনেক উন্নতি করেছে। শুভেন্দু অধিকারী 1 টাকা পকেটে পুড়েছে। মির্জাফর শহীদ মিনারটা তার নামে করে নিয়েছে। নিশিকান্ত মন্ডল যে প্রধান ছিল তার জায়গাটাও তার নামে করেছে। শুভেন্দু কাজ করেনি? না, চোর, ওরা চোর বলতে গেলে ঘৃণা আসছে। তার বাবার জানালো, এটা আমার মির্জাফর তো সে বদমাশ, কুত্তার বাচ্চা। All right, so what happens here in Nandigram, in fact, this is a trend in Bengal. When people start speaking out, they speak really passionately, and
the divide is very, very stark. When you talk to Suvendu Adhikari supporters they would be very agitated and they would be very passionate. When you talk to Mamata Banerjee supporters, of course, they're equally passionate and they hit out at Suvendu Adhikari. Of course, the common refrain that one gets to hear, of course, is that Suvendu Adhikari is a traitor. That is what you hear from Trinamool Congress supporters. That's the rhetoric that Mamata Banerjee has been using, and that seemed to have had a resonance as far as Trinamool Congress supporters here is concerned. Look at this rally. All these people were walking with Mamata Banerjee, and everybody is wearing the blue cap. The blue cap with the blue cap with Bangla Nijer Meki Chai. So it's written, Bengal wants its own daughter. This is the cap that is being given. Another person has a badge. He is wearing this badge. You can see this badge. It's written Bangla Nijer Meki Chai. So this is how political merchandising has been used in order to, get more and more support and also to allow people to show their allegiance to their respective political parties. We've seen the same with the BJP rallies as well. So there is a complete frenzy as far as hectic political campaigning is concerned, and one can only expect. Look like it. So there you have two people in a motorbike with a portable box, and what they're playing, of course, is Khala Habe. So this is the excitement of elections here in India. Yeah. And of course here in West Bengal, people are so passionate Stay about... with me, Indro. Stay with me. We're getting some sound in from Amit Shah's rally. लोगों का समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं और ये आखिरी दिन है प्रचार का यहाँ पर, तो बीजेपी जो है अपना पूरा जो दम है, पूरा जो जोर है, उसको लगा रही है इस कैंपेन में। आखिरी के कुछ घंटे बच गए, इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती भी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। भाजपा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेगी। नंदीग्राम में उनके सामने कोई जो है खड़ा नहीं है जिसे वो टक्कर नहीं दे सकते और हरा नहीं सकते। ममता बनर्जी भी वो कह रहे हैं कि बाहरी है, वो तो खुद यहाँ पर आई ही नहीं थी इतने सालों तक। ममता बनर्जी, आप अगर याद करें तो प्रलय पाल का जो वो ऑडियो क्लिप निकला था, उसमें कहती सुनाई दी गई थी कि शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार की वजह से मैं यहाँ आ ही नहीं पाई क्योंकि उनका वर्चस्व था, उनका दबदबा था, और वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने पूरा जो है पूर्व मेदिनीपुर का जो इलाका है वो संभाल लिया है, तो कोई जरूरत नहीं है आपके आने की। मैं उनके भरोसे चल रही थी, मैं समझ रही थी कि यहाँ पे कोई लोगों को कठिनाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कतें है नहीं, शुभेंदु है, सब संभाल लिया है। अब मुझे पता चल रहा है कि शुभेंदु ने किस तरह से यहाँ पर लोगों को डराया था, धमकाया था, और किस तरह से अधिकारी परिवार ने अपना जो दबदबा है यहाँ पर बनाया था मेरी जानकारी के बगैर। अमित शाह आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों पर फूल बरसाते हुए, शुभेंदु अधिकारी, सिर्फ अकेले शुभेंदु अधिकारी उनके साथ खड़े हैं जो यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी के, और किसी नेता को अपने साथ नहीं रखा है इस बार अमित शाह ने। ज्यादातर आप देखते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय होते हैं उनके साथ में, दिलीप घोष होते हैं उनके साथ में, बट इस बार आप देख सकते हैं कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही उनके साथ में चल रहे हैं इस कैंपेन में, इस रोड शो में। अगर आप देख सकें तो सामने हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों का हुजूम है वो आपको दिखाए, जो रोड शो में चल रहा है, जो ट्रक के साथ साथ चल रहा है, वो लोग हैं जो नाच गा रहे हैं काफी कुछ घंटों से, और वो उत्साह में है। और शुभेंदु अधिकारी का कहना है और भाजपा का कहना है कि यही उत्साह 1 अप्रैल को वोट में भी तब्दील होगा, और 2 मई को जब रिजल्ट्स सामने आएंगे तो वो रिजल्ट्स साफ तौर पर भाजपा को विजयी घोषित करेंगे और शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से विजयी घोषित करेंगे। अगर आप भाजपा से सवाल पूछें कि अगर शुभेंदु नंदीग्राम से जीत कर आते हैं तो क्या वो सीएम पद के दावेदार होंगे, तो भाजपा इस पर कोई साफ जवाब नहीं देती। उनका कहना है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जवाब देगी, वो तय करेगी कि कौन है जो सोनार बांग्ला का जो विजन है, जो सपना है, जो बीजेपी ने लोगों के सामने रखा है, उसको कौन सा विजयी
जो यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा। श्वेता, Things are heating up in Nandigram as the crowds are swelling just 10 kilometers apart between Mamata Banerjee and here at Home Minister Amit Shah's rally. The numbers of people appearing there. You can see Suvendu Adhikari there waving at the crowd, standing right next to Home Minister Amit Shah. Suvendu Adhikari is a man who was earlier close to Mamata Banerjee and part of the Trinamool. He is the most high-profile quitter and dumper of the Trinamool this election. He's joined hands with the BJP, now stands shoulder to shoulder with the Home Minister as they make this final stand for Nandigram. Nandigram is hugely symbolic and in many ways represents a survival fight for Mamata Banerjee after 2 terms and a decade as Chief Minister of West Bengal. Can Suvendu unseat Mamata Banerjee in her first attempt in Nandigram, or will it be a damp squib? No matter what, that will only be decided and known on the 2nd of May. Nandigram goes to the polls as part of this second phase of polling on April the 1st, and the election result will only be out a month later on the 2nd of May. Let's listen. जो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, वो उनको मान रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं इस रोड शो में। इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए बहुत धीरे से जो ये ट्रक है वो चल रही है, क्योंकि इतना बड़ा जो लोगों का काफिला है इस ट्रक के सामने वो चल रहा है, तो उसको साथ लेते हुए भाजपा चल रही है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया श्वेता, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, 1 किलोमीटर के करीब है, बहुत कम है, पर फिर भी इसको साथ लेते हुए वो आगे चल रहे हैं धीरे धीरे से ही सही, कार्यकर्ताओं के साथ उनको एक्नॉलेज करते हुए जो वो विक्ट्री साइन कुछ दिखा रहे हैं उसको एक्नॉलेज करते हुए शुभेंदु अधिकारी के साथ अमित शाह अकेले इस रोड शो पे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, भाजपा के ज्यादातर नेता उनके साथ होते हैं, दिलीप घोष हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर कोई अन्य नेता, पर इस बार सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के साथ चल रहे हैं अमित शाह इस कैंपेन में। Second phase, you can see artisans, you can see dancers, you can see performing artists as well, who've all joined this mega Rath Yatra by Amit Shah. The Home Minister is now in the final phase of his campaign for Suvendu Adhikari. This is the big one, ladies and gentlemen. I'm not sure there has been a bigger Rath Yatra of this kind, certainly not in Nandigram. The narrow bylanes of this particular constituency now completely filled with both Mamata Banerjee's crowds as well as Amit Shah's crowds. Mamata Banerjee has just completed one of her public events, public meetings, and she's on her way to the next. But now the airwaves are filled with the Bharat Mata Ki Jai and Jai Shri Ram slogans of supporters of the BJP. Amit Shah, the Home Minister, has been to Bengal several times in the last few weeks and months. It's become in many ways his second home because the Bengal election is one that the BJP sees as a prestige fight, one that will amplify
its importance beyond the Gangetic heartland, one that will affirm the BJP's rise in states where it doesn't have much of a presence earlier, and one that will truly give it an enormous electoral boost towards the 2024 general election. The BJP, remember, had already tasted electoral success in the Lok Sabha election in 2019 from West Bengal, and now it's looking to up that with this election. These pictures remain on your screen as we slip into a short break. Back with the story.